at People's College of the Medical Sciences. He is at present Secretary of MP also, and he has been trainer of Advanced and Basic NRP, Thalassemia, MAP, and many publications in national and international journals. Our next panelist is Dr. Shankar Chaurasia sir. He is currently working as a professor and head Department of Pediatrics at Maharani Lakshmibai Medical College, Jhansi. He has been at various apex positions of the IAP at state and national levels, and very much enthusiastic and working hardly to improve the department as well as the pediatrics. And our third panelist is Dr. Satwik Bansal, and I think everybody knows about him. He is working here as the Associate Professor in Department of Pediatrics, Residency Medical College, Gwalior. Currently, he is Executive Board Member of the Central Zone of NNF and Joint Secretary of the Gwalior Academy of Pediatrics. He has also interest in the research in pediatrics and neonatal and echocardiography, and has many achievements, academic achievements, as well as the working in the IAP for a long time. So, coming to the panel discussion, and I am very much grateful to the organizers for giving us this chance to discuss about the stress to strength, which is building resilience in residency. So, residency is a very different type of the period where the knowledge is transformed into the practice, and during this process, lot of stress factors may come into the life of any resident. And various studies from the Western literature, they have proposed that around 1/3 of the residents are having the stressful situations in their lifetime during the tenure. But some of the Indian papers are also telling that stress is covering about 50 to 60% of the residents in our community. Why this stress is there, how we can overcome over this, how we can identify the stress factors, what are the various clinical features to identify stress in residents, we will discuss in this panel discussion. So, coming to the first question to our esteemed panelist, Dr. Dinesh, that what does resilience actually meaning and why it is needed in context of the medical residency? Good morning everyone. Thank you Rajesh sir for the nice introduction, and thank you Gaur sir and Satwik for inviting me as a panelist. रेजिडेंट्स के मतलब का टॉपिक है, तो आई थिंक रेजिडेंट्स शुड इन्वॉल्व इन दिस टॉपिक. आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है सुनना. बेसिकली रेजिलेंस मींस अगर हम वर्कलोड एंड इमोशनल चैलेंजेस, तो मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो रेजिलेंस मींस एक तनावपूर्ण स्थिति, स्ट्रेसफुल कंडीशन या कठिन परिस्थिति में जो हमारे रेजिडेंट है उसकी फिजिकल, मेंटल एंड जो भावनात्मक ताकत है, जिससे वो संतुलित होकर अपनी जितनी भी गलतियां हैं, जो भी एरर्स है, उसको ओवरकम कर और मरीजों के लिए और खुद के लिए बहुत बेटर वे में काम कर सके. बेसिक रिक्वायरमेंट जो रेजिडेंस की है, बिकॉज वी ऑल नो दैट रेजिडेंसी पीरियड इज वेरी हाईली स्ट्रेसफुल एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स. तो दैट रेजिलेंस जो हमारी ताकत है लचीलेपन की, दैट विल हेल्प द रेजिडेंट टू ओवरकम दिस स्ट्रेस. जो इमोशनल चैलेंजेस रेजिडेंट फील करते हैं, लाइक they sometimes they have a medical error, sometimes they are coping with the stress or death of the parents, that will help resilience will help to overcome these challenges. And most of the time during the rounds and during the working hours, they will get the sometimes negative feedback, sometimes they may criticize. So resilience will help to improve by taking that feedback in a positive manner, and they will improve their work. So resilience is very much needed to improve their outcome, even for themselves as well as for the patients. Thank you, Dr. Dinesh. So, what I could understood that resilience is nothing but to be flexible enough against the odds which you are going to face in your residency. So, there are two words: thriving and survival. So, it's not merely the survival. Survival is just for the existence. But thriving, you have to face the odds and you have to improve yourself throughout this period.
So thank you, Dr. Dinesh, to enlighten us. Coming to the next, that if this resilience is needed, so there must be some stressors. So my question to Dr. Chaurasia, sir, that what are some common stressors faced by the residents in day-to-day practice? Thank you, sir, for nice question. As we see this year, largest number of residents resign from their residency. So there is some stress. Even in my institute, 5 or 6, even my department, 2 residents left. I have also seen such. Yeah. So what happens? 2 महीने उन्होंने काम किया, सडन उनको इमरजेंसी में लगाया, रेजिलियंस नहीं था, कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा सर. सो एक बार काउंसिल किया, 2 बार काउंसिल किया, तो दे लेफ्ट. इसमें थोड़ा सा समस्या और क्या आ रही है, जैसे सर्जरी और ऑर्थो में सबसे ज्यादा रेजिडेंसी ने छोड़ा और कल्पेट बन गए एचओडी की, बहुत काम करा रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है, जबकि पिछले 50 साल से कोई डिपार्टमेंट चल रहा था. सो दिस इज द नीड ऑफ आर. वी शुड मेक more resilient our residents. So as one study published in topmost newspaper, they compared surgical residents with anesthetics. So they compare how much work. So the surgical residents feels 37% more work and they are not able to develop their abilities, and 26% in anesthesia could. So risk their own health while pursuing good results. 66% says yes, surgical residents, and 60% in anesthetics. Overload, yes, this is the topmost stressor in our institutions. That overload, 90% of surgery residents and 80% of anesthetists, they are overloaded with their work. And they are pursuing their personal life very poorly. 68% accepted in surgery residents and 51% medical residents. And they are not giving time to their self-care. So they are not doing good as per, because in our institution or hospital, a lot of work and stress factors. So this is the academic. What are the academic stressors? Yes, long working hours. हम बार बार बोल रहे हैं रेजिडेंसी का आवर 8 घंटे होना चाहिए, 10 घंटे होना चाहिए. सर होंगे कैसे? होंगे कैसे? पेशेंट का 10 का बेड है और 25 पेशेंट है, तो कैसे हम आवर्स कम कर देंगे? बिकॉज वी आर जस्ट playing with life. Patient load and inadequate rest. Frequent night duties of residents. Pressure to perform academically and clinically well. And lack of adequate sleep and recovery. And this is the commonest stressor of our residents. Second, personal or psychological stress. Second. So they have तुरंत एमबीबीएस कर आए, सीधा इमरजेंसी में आए और घर की हालत वही, एक्सपोजर टू डेथ, सफरिंग, क्रिटिकल इलनेसेस, fear of making medical errors. Yes, they have lack of emotional support. और एचओडी की डांट अब सर थोड़ा कम हो गई, क्योंकि ज्यादा डांटेंगे छोड़ के जाएगा और बोल जाएगा एचओडी की वजह से छोड़े. सो बुलिंग, हरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, सीनियर से ज्यादा अब अटेंडेंट्स की. अटेंडेंस ज्यादा बुलिंग हरेसमेंट कर रहा है बशर्ते हमारे सीनियर. सो वी हैव टू मैनेज दैट पार्ट आल्सो. Burnout, depressions and anxiety symptoms due to all these overloaded. Social, difficulty in maintaining relationship of family life. एज इतनी हो जाती है कि सर फिर मैरिज टाइम भी आ गया. हमारे टाइम होता था, पहले एचओडी बोलता था शादी तो रेजिडेंसी के बाद होगी. अब तो मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और उसमें अगर बेबी हो जाए तो कितना स्ट्रेस है सर उसको. इधर फैमिली देखना है, उधर रेजिडेंसी देखना, और दोनों में कोप अप करना सारे लोग कर नहीं पाते हैं. तो वो बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेस फैक्टर्स है रेजिडेंट्स के. सोशल आइसोलेशन ड्यू टू कमिटमेंट, लैक ऑफ टाइम फॉर हॉबीज, ना के बराबर टाइम मिल पाता है. प्रेशर फ्रॉम पीयर्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड
gender-based discrimination, it also persists in some ways. And institutional, yes, we have not very good infrastructure. We have not all the aims. We have our state medical college. And what the conditions of masses in our time, they stay same at that time. हमें भी ऐसे लगता है हम भी कहीं नहीं मैस में खाना खाते थे. अभी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं. सबसे ज़्यादा सुधार की जरूरत हमारे को बेसिक फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. धीरे धीरे हो रहा, लेकिन अभी भी बहुत ही इसका पेस बहुत स्लो है. So poor working condition and lack of facility is the most common problem for residents. Low stipend, delay in salary disbursement. Stipend तो खैर ठीक है सर. Delays in salary disbursement and lack of proper grievance redressal mechanism. So हम सभी जगह देख रहे हैं. अभी जैसे कलकत्ता में देखा वो जो इंसिडेंस हुआ, तो सिक्योरिटी के नाम पर कहीं कुछ नहीं. इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है. अब मेरा कॉलेज है सर 1000 बेडेड, मेरे पास है केवल 100 गार्ड्स. सो कैसे कोप अप होगा? तो हमारे को सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, उनको सिक्योरिटी देनी होगी, एक बेटर एनवायरनमेंट देना होगा, तभी वो अपना 100% आउटकम देंगे. और एक नई प्रॉब्लम जो आजकल है, जो हमारे आजकल रिपोर्टर ही सारे डॉक्टर बन गए हैं. कुछ को लोग कुछ निकालते हैं. डॉक्टर की थप्पड़ क्यों डॉक्टर ने मारा है, उसके रेजिडेंस खत्म हो गया था, इतना अटेंडेंट ने उसको न्यूसेंस किया. सो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एवरी हॉस्पिटल्स नाउअडेज. Thank you, sir. Thank you. So, what I should honestly admit that residents are the backbone of any medical institute. There is no doubt. But there are challenges also, and we have to face the challenges, and we have to prepare ourselves to face these challenges. So, my next question to Dr. Satvik, that what strategies can help residents to build resilience in a hospital and support the stress-free environment for the residents in hospitals? Build a resistance. You cannot create a resistance. Resilience. You need to cultivate resilience or make it a culture in the department or where the residents or which department are we talking about. You have to create a culture of it there. And 2-3 important things are there. First of all, there should be a good support for the resident, where the resident should feel that he or she is not getting judged by what is happening or what she is feeling. And to create that sort of a system, peer support networks as well as mentorship models are very, very important, because there is no judgment there, and the resident can express the beliefs or fears very clearly. Second, it is important to develop reflections and debriefing sessions for the residents after any stressful situation. That will help the resident to better cope up with those situations. And to maintain a work-life balance or to maintain a work-rest balance, we say, but it becomes a little bit difficult for them to do so, because duty hours are very unpredictable. But the thing is that the resident should feel that he or she is valued, is heard, and is acknowledged for the work that he or she is doing, and then the resilience as a culture can become. So for that, leadership, empathy, as well as having a constructive feedback and integrating wellness in the curriculum itself of residency would play a great role. Thank you, sir. Truly said, Dr. Satvik. As we have seen in the last session also, Dr. Tomar has highlighted that we are going towards the CVME curriculum, but this is very difficult right now. We are in the transition phase, so sometime it will happen. वो दिन आएगा जब हमें ये सब चीजें करने को हो जाएंगी, हम बोल सकेंगे कि everything is okay. But this is the time where transition is happening. हमें पुराने कल्चर के साथ भी रहना और आगे भी बढ़ना है. So, if any stressful situation, so that will be reflected in the residents also. So my question to Dr. Dinesh is that what are the signs that a resident may be struggling with the stress or burnout? So if there are signs, so how we can identify it? This is very common scenario with PGs जो काम कर रहे हैं, that will have some stress or they have some feature of burnout, but we have to find out at early age.
जैसे सर ने बताया, अगर वो रेजिडेंस उसका खत्म हो गया, दे विल लेफ्ट, छोड़ के चले जाते हैं, या दे विल हैव मेंटल इश्यूज. तो some common normal signs that we can identify in early phase, that in physical signs, constant fatigue, थका हुआ रहेगा, नींद नहीं आना है, या ज़्यादा ड्यूटी आवर्स में भी सो रहे, ओवर स्लीपिंग, frequent illnesses, minor illnesses and change in their appetite behavior, खाना नहीं खा रहे हैं, खाना छोड़ दिया. That will all the physical signs that will help to identify कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है रेजिडेंट हमारा. इमोशनल फीचर्स में दे आर मोर इरिटेबल, मोर एंगरफुल, फीलिंग सैड, होपलेस, यार कुछ नहीं हो सकता, आप तो पता नहीं कहाँ फंस गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दे हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दे आर इमोशनली डिटैच्ड टू द देयर फैमिली मेंबर्स और दे इवन द पीयर ग्रुप्स. दे आर द इमोशनल साइंस. एंड देन we proceed to mental and behavioral changes, that there loss of motivation and procrastination. जैसे सोचते कि अरे बस टालम टोल लगा, behavior में काम करना है, खत्म करना है. They usually withdraw from colleagues, friends. They are doing more mistakes during their work. Loss interest in hobbies. सर ने बताया कि hobbies की टाइम ही नहीं है रेजिडेंट पीरियड में. तो जो भी उसकी हॉबी थी, जैसे मुझे थोड़ा गाना गाने का शौक है कभी कभी, तो वो सारी चीजें छूटती आती हैं. और they will indulge in some social drug abuse like alcohol and some drugs that is easily available nowadays. Professional science में they are really empathic toward the parent, patients. They are most of the times taking leaves और लेट आने लग जाते हैं. Conflict होता है, स्टाफ से लड़ाई, कलीग से लड़ाई. और in simple words they are just like we are here to just survive a day. हमें आज का दिन निकालना है कैसे भी, और उसके बाद कल का कल देखेंगे. There are some early warning features that can be easily identified as stress or burnout. And I think your words are very proper, and anyhow somewhere we have all have experience of in during our residency some of one or another of the signs and symptoms. So जब हम याद करते हैं अपनी रेजिडेंसी को, तो ये सब चीजें हुई, but anyhow we could come out of them, and now we are here and doing all the best for our society as well as the students. So and in the last session also we have talked about the mentorship program. So we all are the mentors for the residents also, and this reversal also. हम आपसे भी कुछ सीख रहे हैं और हम आपको कुछ बता रहे हैं. So whenever these signs are diagnosed or identified, this is our duty or the colleague's duty to do something for improvement. So coming to the next speaker, Dr. Chaurasia sir, that how does the resilience impact the patient care? अब stressful बच्चा है, वो इतना टेंशन में है, तो फिर ट्रीटमेंट में भी कुछ असर आ सकता है. तो how is it? So sir, resilience means better patient care. It provides emotional stability to doctors, which leads to clear, empathetic communication. It focus and adaptability leads to timely and accurate decisions. Because if he is resilient, he has optimism, and he has a great energy to do the work, and it builds the patient and family trust. Team engagement occurs, it causes decrease in error and better safety. So overall it improves both family satisfaction and clinical outcome. So resilience is a ripple effect to team members through calm leadership, through patient and family trust and hope, and to the health system through reduced turnover and safe care. Thank you sir. So एक शब्द में कहूँ तो मन चंगा तो कटौती में गंगा. And when we see the ratio of the population with the pediatricians, so pediatricians are very less in our country, around 50,000. और care कितना ही करनी है, crores of children are waiting for you. So if you are not okay, you cannot serve the society. So we have to take care of that, and we have to learn resiliency during the residency. So coming to the Dr. Satwik, and what is the role of emotional intelligence and time management to reduce stress? Sir, I think emotional intelligence when combined with time management will form an inner GPS for the resident, because emotional intelligence is simply not to react impulsively. You have to pause and identify the emotions that you are feeling and the emotions that the person in front of you is feeling, and then to respond accordingly. So if you are doing that, you will automatically avoid unnecessary conflicts. Your relationship with your seniors, with your nursing staff, even with attendants will improve dramatically, and it will lead to a lot of
conservation of your emotional energy, which will be shown in improving your learning as well as your practice and everything. Similarly, for time management, I would say that if you are managing the time properly, it will put a structure to the chaos that is happening around you. So, it is important to take short, structured breaks in between, which will just revive yourself, and to have a time management strategy in place is extremely important. This is what I would like to say. Thank you, Dr. Satwik. So, for Gen Z, the message is like in their own language. अगर हम बोलें कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐप्स खुले हैं, तो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर विल बी लेस, आउटपुट विल बी लेस, हमारा काम आसानी से नहीं होगा. So this similar software is working in our brain also. So if so many tasks are there, so many stressful situations are there, and we are not able to focus over the patient, the outcome will suffer. I think this is the explanation. So the time management, and for everything we all know the 24 hours are same for us, for the PM of the India and for the President of the US. So these 24 hours should be utilized as a maximum, and we have to learn it. So coming to Dr. Dinesh, what daily habits support the resilience in high pressure environment in residency? Can we improve the habits to overcome the stress? डेफिनेटली सर, हेल्दी हैबिट्स जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वी ऑल नो अबाउट दैट बट वी यूजुअली नॉट फॉलो इट. तो कुछ कॉमन डेली हैबिट्स जो हम अगर फॉलो करें दैट विल रिलीव द स्ट्रेस इन द रेजिडेंशियल पीरियड. लाइक फर्स्ट, ईटिंग हैबिट्स, ईट न्यूट्रिशियस. मैक्सिमम टाइम पर भी रेजिडेंस के जल्दी ड्यूटी में मील स्किप करते हैं, पिज्जा बर्गर है ना, पिज्जा बर्गर खा लिया. दे विल यूज फास्ट फूड. तो बेटर है कि दे विल केप सम ड्राई फ्रूट्स और सम फ्रूट्स अलॉन्ग विद थिंग, और देन जब भी टाइम मिले थोड़ा सा खा लिया, फिर पानी ज़्यादा पिए, और अवॉइड करें कि चलो ड्यूटी पर जाना है, नींद नहीं आई, एनर्जी ड्रिंक लिया और हमें पिया और निकल गए. तो वी ऑल नो कि हमें अच्छा खाना खाना है, बट हम फॉलो नहीं कर सकते. सेम विद एक्सरसाइज, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट यदि हम वॉक कर लें या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, दैट विल हेल्पफुल टू. जैसे आपने बताया कि 8-10 घंटे की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो फिर भी हमें जरूरी है कि हम एटलीस्ट रेजिडेंट पीरियड में 6 घंटे की नींद पूरी करें. स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें. खाते समय में बेवरेज वगैरह और यूजली मोबाइल स्क्रीन अवॉइड करें. एंड इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन. कम से कम 5 से 10 मिनट का अगर हम मेडिटेशन करते हैं या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल टू रिलीव आउट द स्ट्रेस. स्टे ऑर्गेनाइज्ड. रोज का हमें एक छोटा सा प्लान बना लेना चाहिए कि हमारी ड्यूटी की शिफ्ट ये है, प्रायोरिटी वाली काम हमारा है कि पहले काम ये करना है, ये जरूरी काम है. दैट विल हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस. अदरवाइज और मुझे ये करना था, मैं भूल गया, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द पीजी टाइम. तो ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग, रोज का 1-2 दिन का प्लान बनाना कि आज मेरा ये क्लास है, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड सपोर्टिव रिलेशनशिप अपने पीयर ग्रुप से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से. एक ऐसा रिलेशन बनाया जहाँ वो नॉट ओनली जो हमारा वर्क के टाइम पर जो मैं काम है उसको डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि वो अपना कुछ एंजाइटी या कुछ और प्रॉब्लम उसको भी डिस्कस कर सकता है, जो कि बहुत हेल्पफुल है. रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज. रोज खुद से एनालाइज करना है कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, कहाँ मुझसे गलती हुई, उस गलती को मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ, और वो अगले दिन के लिए रिचार्ज होकर अच्छे से काम कर सकता है. एंड सेल्फ कंपैशन, दैट उसे खुद के प्रति उदार होना है. वी नो कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर मेड टू कमिट सम मिस्टेक्स. तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीजी से कुछ ना कुछ गलती होती है एंड दे फील गिल्टनेस. तो हमें गिल्टी नहीं समझना अपने आप को. वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड डू इट बेटर. वी ऑल आर सिंपल थिंग्स दैट विल हेल्प द रेजिडेंट टू मेक देम मोर रेजिलिएंट एंड बर्नआउट और स्ट्रेस से आराम से बाहर निकल सकते हैं. Thank you, Dr. Dinesh. So we have to identify our me time. आपका अपना कुछ टाइम होना चाहिए. So which body you are working with this body throughout the 24 hours. So at least give 24 minutes for your body. थोड़ा स्ट्रेचेस कर लिया, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया, आपका दिन भर का काम बन गया. And sleep, why it is needed? Because sleep is the time of repair. तो वो तो चाहिए ना भैया अगले दिन के लिए तैयार होने के लिए. So very well said, Dr. Dinesh. And
These all points are very important because if you are there, then only this world for you. Otherwise, nothing is there. So we have to take care of ourselves. Our respect, self-respect is needed most. डॉक्टर चौरसिया सर, कुछ सीनियर्स तो होते ही हैं हर बैच के लिए कि टेंशन दे जाते हैं. So how can seniors help junior colleagues to come out of the stress or their colleagues also? Yes, sir. So most of our juniors they are under effect of seniors. They learn all the things from seniors. हम राउंड पर भी होंगे तो कहेंगे अच्छा बॉस तो ऐसा करते थे, चाहे वो सही करे चाहे गलत. So seniors act as immediate mentors and role models for juniors. There should be positive attitude from seniors that can reduce the stress levels of juniors, and there should be a very supportive environment fosters the confidence of our juniors and teamwork. So this next two slides, they are a message for our seniors because all the juniors they become senior 1 or 2 years. So there should be effective communication and approachability. Be open and approachable to juniors query. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर को फोन ही नहीं लगा पा रहा. Encourage open discussion without fear of criticism. एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हम सब सीखने आए हैं. ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर क्लास में कुछ आंसर दे दे तो थर्ड ईयर नाराज हो जाए, ईगो हर्ट हो गई. Provide constructive feedback instead of harsh remarks and communicate with empathy and patience with juniors. So regular check-ins with juniors about their workload and well-being. उनके साथ थोड़ा बैठ के काम करा देंगे तो शायद वो अपने डबल स्ट्रेंथ से काम कर लेंगे. Sharing personal experiences of overcoming similar challenges and encouraging their self-care and healthy coping mechanism. उन्हें अपनी भी केयर करनी है जूनियर्स को, इसके बारे में बताना है. अपना जब तक हेल्थ ठीक नहीं होगा वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. And being available as a listener in the times of stress. So in a nutshell, every kind word of senior strengthens the colleague resilience. Very nice. So thank you very much. Ultimately, the crux is that चाय पे चर्चा करते रहना चाहिए. Sit together, discuss together. अगर कुछ हो भी गया, किसी ने कुछ कह भी दिया तो कम्युनिकेट करते. सर, योर दिस पॉइंट हैज हर्ट मी. आगे से थोड़ा सा हम लोग और बेटर करने की कोशिश करें और आर्गुमेंट से बचना है. वी शुड डिस्कस बट देयर शुड नॉट बी एनी आर्गुमेंट. देन ओनली योर 3-year रेजिडेंसी विल बी स्मूथली गोइंग. इन द लास्ट session we have discussed about the feedback and how much it is important. So is it important to build the resilience also, Dr. Sahu? Yes, sir. Feedback is very important, but when that feedback is delivered properly. So as sir has just said, having a constructive feedback encourages reflection, adaptability, and it also develops an atmosphere of personal growth in the resident. So that leads to continuous self-improvement. So secondly, what that constructive feedback does, that it builds tolerance to understand the critique also. So resilient teams view feedback as data and not judgment, and that is the mindset of progress. Thank you. So there is a term in medical education that 360-degree feedback. Everybody is noticing you, your working style, your experiences, your intelligence, everything is being observed by your seniors, your colleagues, your juniors, your nursing staffs, as well as the attendants of patients. तो जहाँ से भी जो भी feedback आपको मिल रहा है तो we need to improve ourselves. This is our study curriculum also. So very nice words from Dr. Satwik. Most of the time what happens, अगर कहीं कुछ हादसा हो गया रेजिडेंट्स के साथ में तो आरोप दे दिया जाता है कि भाई वो इंस्टीट्यूट खराब है, वो डिपार्टमेंट खराब है और पूरा सिस्टम ही खराब है. खराब कहने में हमें बहुत आसानी फील होती है. सो इज देयर एनी वे टू इम्प्रूव द सिस्टम लेवल चेंजेस व्हिच कैन हेल्प टू कल्टीवेट द रेजिलियंस इन रेजिडेंसी प्रोग्राम? डॉक्टर दिनेश जी. सर, रेजिलियंस केवल इंडिविजुअल बेसिस पर डिपेंड नहीं करता है कि पीजी में आ गया या फैकल्टी में आ गया. रेजिलियंस डिपेंड ऑन द सिस्टम इन विच he or she work और जो एनवायरनमेंट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको
वो किस उसके लिए कंडीशन है नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रेजिलेंट होता है। तो जो सिस्टम लेवल चेंजेस या तो है या थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दैट वी शुड गिव अ सपोर्टिव वर्क कल्चर, जहाँ हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसा इंकरेजमेंट करें कि अगर जो भी रेजिडेंट है उसे कुछ हेल्प चाहिए, दे विल कम डायरेक्टली टू द सीनियर पर्सन और पर्सन जो उसको हेल्प कर सकता है, ना कि डरेगा यदि मैं उसको बोलने जाऊंगा तो वो पता नहीं क्या बोलेगा, या मुझे कुछ मेंटल इश्यू है, मैं उसकी हेल्प करने चाह रहा हूँ तो वो मुझे कुछ शर्म आएगी, मेरे को कुछ स्टिग्मा लगेगा। तो वी हैव टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट जहाँ वो जाके अपनी हेल्प आसानी से मांग पाए। वो वर्क कल्चर ऐसा होना चाहिए कि वो एक टीम की तरह से वर्क कर पाए। सेकंड, जो वर्कलोड है, जो ड्यूटी आवर्स मैनेजमेंट है, एज पर जो एनएमसी गाइडलाइन है, जिसमें हमें जितने ड्यूटी आवर्स हमें एक वीक में अलॉट कर रहे हैं, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उतने आवर्स उसको अलॉट करके ड्यूटी कराएं। दो भी नो कि वर्क ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा है, सर ने बताया 10 बेड पे 15 पेशेंट है, 25 पेशेंट है, कैसे हम वर्क मैनेजमेंट करेंगे, बट वी हैव टू मैनेज दैट वर्कलोड आल्सो, तभी तो वो अगले दिन दूसरे दिन आगे अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। Accessible mental health and well-being resources, we should have some facility जहाँ कुछ मेंटल इशू है, कुछ मेंटल काउंसलिंग चाहिए, वो पीजी जाके आराम से करा सके और दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं कि वहाँ बात की और ये बात पूरे स्प्रेड हो गया, वो सब डिप्रेशन में है, उसे तो परेशानी हो रही है, उसके साथ में ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसा कर देगा। दैट इज ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल। मेंटर-मेंटी की हम बात की अभी, तो मेंटरशिप एंड सुपरविजन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ जैसे हम यूजी में अभी हम मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं कि 3 यूजी को रेगुलरली हर महीने मीट कर रहे हैं, सेम वी कैन डू विद द पीजी आल्सो। एवरी पीजी हैव अ वन मेंटर फैकल्टी, जहाँ वो डायरेक्ट अप्रोच कर सके, जो भी कुछ परेशानी है पर्सन वो भी डिस्कस कर सके, दैट विल वेरी मच हेल्प टू रिलीव आउट द स्ट्रेस। वी हैव टू वर्क आउट द हमारे एनवायरनमेंट में, सिस्टम में कुछ ऐसी वर्कशॉप हमें आयोजित करनी चाहिए जहाँ हम उसको हाउ टू कोप विद द डेथ या सम टफ कंडीशंस, स्ट्रेसफुल कंडीशन, अगर कुछ मेडिकल एरर होता है तो उससे हमें कैसे डील करना है। अब उसे पता नहीं, उससे कुछ गलती हो गई, वो इसी गिल्ट में कि मुझसे गलती हुई इसलिए ऐसा हो गया, उसे पता नहीं मुझे इसे कैसे कोप करना है। तो इस टाइप का हम कुछ वर्क शॉप आयोजित कर सकते हैं, रख सकते हैं, जहाँ हम उसको इन सब चीज़ों से ऊपर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जहाँ वो उसे अच्छे में लेके उसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि सोचे कि बस रोज का काम आते हैं, राउंड को आएंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं सिखाने वाले। ऐसा मैक्सिमम टाइम को हो ही रहा है। तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, मुझे जो फीडबैक दिया गया वो उससे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, और वी हैव टू अप्रेज उसका कुछ छोटी भी है काम जो किया उसने अच्छा, मैं उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। We should promote the work-life integration, like उसकी जो लीव है, जहाँ वो जाना चाहता है उसमें उसको लीव को मैनेज करके उसे लीव अलाउड करें। जो हमारी कुछ सोशल एक्टिविटी है, जैसे सर मेरे टाइम पर था, मैंने पीजी किया था, चंदोरी मैडम एचओडी थी, वो हर साल में 2 पिकनिक ऑर्गेनाइज करती थी फॉर ऑल पीजीज। तो अपनी बस में एक पीजी पीआईसी में, एक पीजी एनआईसी में छोड़ा, सारे लोग पिकनिक पे निकल जाते और शाम को लौट के आते थे। तो कि उनका सोशल और कम्युनिटी जो अपना हॉबी वाली है कि हम कुछ उनके अकॉर्डिंग कुछ सोशल कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ हालांकि होते हैं, बट वी नीड टू और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड लास्ट है लीडरशिप कमिटमेंट, जो भी उस एनवायरनमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको खुद से जाके सेपरेटली कुछ फीडबैक लेने चाहिए, जहाँ एनोनिमस फीडबैक, जहाँ वो उस फीडबैक के बेसिस पर अपने सिस्टम में क्या चेंज करना है, कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं जो रेजिलियंस डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। Thanks, Dr. Dinesh. So 2-3 things which are coming out of this discussion. तो हमारे समय में कहा जाता था रेजिडेंट्स को, भाई आने का टाइम था, जाने का कोई टाइम नहीं, दिस शुड बी चेंज, यहाँ से हमें शुरू करना है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ब्रेक्स फ्रॉम द रूटीन एक्टिविटीज, थोड़ा सा ब्रेक, जस्ट लाइक दिस कॉन्फ्रेंस, इट्स अ ब्रेक ना, है ना। हमारे रेजिडेंट्स भी घूम रहे हैं वाले, तो दिस इज द ब्रेक एंड वी नीड समटाइम्स दिस एक्टिविटी। सो कमिंग टू द डॉक्टर चौरसिया सर, how can team communication influence resilience among the residents? So team communication is an effective tool to develop and disseminate resilience in resident doctors, because what team do, it causes exchange of informations, emotions and feedback among team members in clinical settings. It includes
handovers, ward rounds, peer support discussions, and multidisciplinary meetings. So what happens nowadays in most colleges, they are in first year, second year, third year resident. So what is the work designated to first year? Second year will not touch that work. So we should change this system. We should, most of the college, they are unit system. So we should work like as a unit, not like first year. Sampling कर रहा तो बस वही कर रहा, second year हाथ नहीं लगा. So एक team work है, एक unit work है, कि unit की तरह काम करें. It causes better resilience in our residents. And what team develops? By team management, we develop our communication skills, leadership, and appreciate. If we appreciate our team members, it increases the work power of this resident. And emotional debriefing, it builds the coping capacity. So in most of our ALS workshops, BLS workshop, and RP workshop, we are just teaching how teamwork. Still, we are not disseminated in the whole of the colleges or emergency, but we are trying that residents should keep as a teamwork because संगठन में शक्ति है. Surely, sir. So, whatever outcomes we are getting in our wards or the ICUs, that is the result of the teamwork. Although you are not identifying it, ये है, it is existing, but we have to improve it. And NMC is also telling to be a good, competent doctor, there should be quality of the good communicator. There should be, you are the leaders, and leaders' quality is the good communication. जितने भी leaders आपको मिलेंगे आप देखिएगा, they are good communicators. They can convince you whatever they want to spread the information. So this we have to learn from the residency only, and resiliency comes from that. So हो जाए तो एक God, परमात्मा. So is there any spirituality support to become the more resilient during the residency? Yes, sir, absolutely. It is important to understand that spirituality does not equal to religion. So spirituality is that is different. Religion is different, and spirituality or personal beliefs are different. Personal belief is different. Definitely. So spirituality would be to find meaning and understanding that there is some bigger purpose to what you are doing, and that will help you to act as an internal anchor during periods of uncertainty. It will encourage gratitude, reflection, as well as emotional stability, and make you more humble as well as empathetic towards your patients and towards your colleagues as well. So therefore, it needs to be integrated in the mind of the residents. And how you can do it? It's not about praying. It is about doing mindful activities like journaling or even playing a musical instrument or doing whatever you are liking. All these things or all these acts of mindfulness will make you more emotionally stable. So that is how it should be done. Thank you. So spirituality is nothing, just believe in yourself. Start respecting yourself. जो कुछ है सब आपके अंदर है. So coming to the last, sir, any concluding remarks, Dr. Dinesh ji? एक छोटा सा हम लोगों ने बनाया शायरी दूर के, वो बोलना चाहेंगे. थकान के बाद भी मुस्कान बनी रहे. क्या बात. थकान के बाद भी मुस्कान बनी रहे, हर हार में नई उड़ान बनी रहे. दर्द भरे पल भी गुरु बन जाए, दर्द भरे पल भी गुरु बन जाए, यही रेजिडेंसी की पहचान बनी रहे, यही रेजिडेंसी की पहचान बनी रहे. Sir, you have stolen the show. Thank you. Dr. Satvik ji, would you like to tell something? इतना अच्छे के बाद मैं क्या बोलूं? ठीक है. So nothing from us, and the take home message is that you have to care yourself. Think of yourself. If you are okay, then only you are going to keep healthy your children. Society is waiting for you. And when doctors are thriving, then patient outcome will also be. Today, although he is not physically here, but most of the conferences were always with him only. So he always says, be kind for the others, and before that, be kind for yourself also. So thank you very much for patience listening, and I am very much thankful to our esteemed panelists. Thank you.